Hello students, in this video we will see how to do question number 1 and 2 of exercise 3.4. So let's start. The first question is find the square root of each of the following by division method. The first part is 2401. We have already studied how to find out the square root of any number using this method. So the link is above, you can check it out. We'll see here also. First step is make the pairs starting from ones place. So ये ones place से start करके हमने pair बना लिए. Now we'll have to take a number which is smaller than 24. We'll have to take a square number which is smaller than 24. So 4 4 ja 16, subtract it. 24 minus 16 will be 8. Now the next pair will come down 0 1. We are going to add 4 here, so we'll get 8. So same number will come here and here. So किसका स्क्वायर करें कि हमारे पास 1 आए, 9 9 जा फाइन. So easy, 9 9 जा 89, 9 ja will be 8 0 1 and remainder is 0. So your answer will be here square root of 2401 will be 49. That will be your answer. Fine. Now let's see the second part of it. Second part of it, what does it say? It is 4489. Now you will have to make the pairs first. So we have made the pairs. Now we'll start the division. Fine. So 6 6 ja 36, 7 7 ja 49. So 6 6 ja 36 because the next one will be bigger than this. So इसको आप minus करेंगे, what you will get 8 and next pair will come down 8 9 6 plus 6 12. Fine. Now we want same number here and here. So what we can take, किसका square 9 होता है 3 का, 3 3 जा 9. But if I put 3 here, what I'll get? 3 को 3 से multiply करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 3. So which is smaller than this? So I can't take 3 here. मैं यहाँ पर 3 नहीं ले सकती हूँ. So what else I can take? और इसके अलावा और क्या लूँ मैं? Fine. तो क्या ले सकते हैं हम इसके अलावा? 7 7 7 जा भी आपका 49 होता है which is 9 at one's place. So let's take 127. 7 जा क्या होगा? 7 7 जा 49. 4 here. 7 2 जा 14. 8 here 1 and 8. So we have got same number. So we'll be taking 7 here. 7 and 8 8 9 and 0 here. Fine. So what will be answer here? Root of 4489 will be 67. It is 67. 106929. इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट. सो अगेन पेयर पेयर एंड पेयर. अब कौन सा स्क्वायर नंबर है विच इज लेसर देन 10? 3 3 जा 9. Subtract it, you will get 1. Next pair will come down 6 9. Add 3 to it, so you will get 3 plus 3 6. So which number you should take here? 62 2 ja 2 2 ja 4 and 6 2 ja 12. Subtract it, so it will be 5 4. Next pair will come down 29. Add 2 to this, so it will be 64. Now kiska square? Again 3 and 7. So 64 3 ja 3 3 ja 9, 4 3 ja 12, 1 here, 6 3 ja 18 19. This we cannot take, so we'll take 7 here, 7 here. 7 को 647 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? So इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49. 4 here, 7 4 ja 28 plus 4 3 here and 45. So 4 5
9 and 0. So what will be answer here? Answer will be root of 106929 will be 327. Fine. So that's how you're going to find out the square root of any number. Let's go for the next one. So क्या है हमारे पास next? We'll have to find out the square root of 167,281. इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. फाइन. सो अगेन यू विल गो फॉर द पेयरिंग. ये पेयर और ये पेयर. दिस इज योर फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. फाइन. सो नाउ मेक दिस. नाउ 4 ja 16, 0. This 72 will come down. 4 plus 4 8. अब 8 में 1 भी रखेंगे. 81 1 जा तो भी इससे बड़ा होगा. तो what will do? 0 and 0. 80 0 0. So what will get here? 72. This 81 will come down. Fine. So इसमें 0 ऐड करोगे तो सेम 80 ही रहेगा. And now what we can take? 9 हमें साफ दिख रहा है. 9 9 जा 81 होता है. 9 here. 9 9 ja 81 and 9 8 ja 72 and 0. So the answer, don't forget to write the answer. So it will be 167,281 का जो square root है that is 409. That will be your answer here in this case. 53824 pair and single. कई बार सिंगल भी हो जाता है. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू. सो 5 से छोटा स्क्वायर नंबर. 2 2 जा 4. 1 नेक्स्ट पेयर 38. 2 plus 2 4. सेम नंबर हेयर एंड हेयर. सो 3 जा आ सकता है. लाइक 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12. छोटा है इससे. सो 9. दिस 24 विल कम डाउन. फाइन. सो 43 plus 3 46. किसका स्क्वायर जो है वो 4 होता है? 2 का. सो वी कैन टेक 2 here and here. 2 2 जा 4. 6 2 जा 12 and 4 2 जा 8 plus 1 9. So what will be our answer here? आंसर क्या आएगा? Square root of 53,824 is 232. 232. Fine. Now is sixth part of it. Sixth part क्या है इसका? Sixth part है हमारे पास 213444. Fine. इसमें भी ones place से pairing करेंगे. Fine. So let's make the line. Now 21. 4 4 जा 16. 5 5 जा 25. So 4 4 जा 16 वो से छोटा है. माइनस करेंगे. You will get 5 here. Fine. Now this 34 will come down. 4 plus 4 8. Fine. Same number here and here. So क्या रखें? 8 8 1 जा 8. 8 2 जा 16. 8 3 जा 24. 8 4 जा 32. 8 5 जा 40. 8 6 जा 48. 8 8 7 जा 56. वो तो बड़ा हो जाएगा. 8 5 जा हम देख लेते हैं पहले. 5 5 जा 25. ठीक है. 2 and 42. Now 86 6 ja 6 3. It is 516. Fine. So that we can easily take. So it will be 6 6 ja 516. इसको subtract करोगे. इसको subtract करके हमारे पास क्या आएगा? It will be 8 1 and 4 and 4. Fine. So now again ones place पर जो digit होता है उसको double करते हैं हम. 6 plus 6 12 9 92 आएगा. Same number must be there and these two places at
these two places we must have the same number. Fine. So what can we take? यहाँ पे 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 and 2, so it will be 1844. Fine. And 0. So what will be our answer here? Answer क्या होगा हमारा? 462. Fine. So let's write the answer. Square root of 213,444 will be 462. यहाँ पे हमने 462 लिखा है, ठीक है ना? 462 will be the answer here in this case. Now the second question. In second question we have to find out the number of digit. अगर इनका square root निकालें इन सभी numbers का तो क्या आएगा? उसमें number of digits कितने होंगे? Fine. So let's see. उसका एक simplest method है. You just make the pairs. इसके पेयर कितने होंगे? 1 पेयर है तो 1 डिजिट होगा. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पेयर्स you'll get? 2, तो 2 डिजिट्स होंगे. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पेयर्स? 2, 2 डिजिट्स होंगे. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पेयर्स? 1 2 3, so 3 digits. Next one, 1 2 3, 3 digits. So this way you can easily find out the number of digits in this case. Fine.